Guys, today I will let you know how to make a water pump that pumps water really. So we have required many things. The things are following. Number one, a 1 liter water bottle, matchstick, scissor, some screws, washer, a switch with 2 pin, two this pipes. Any pipe you can take, and you can also take straw. 2 AA size batteries with wire, cutter, candles, and the most important, these 3 carton pieces that are of 7 centimeter into 3 centimeter. 3 carton pieces, 7 centimeter, 3 centimeter. Do not use thermocol, because in this channel we are against of plastic. We are in the for to save environment. So I'm not using any type of hazardous these or toxic things that are not good for our clean green environment. Next, 2 bottle caps with a big hole in one, and one with a small hole, or without a hole also it will work. As the diameter, you can see from Google what is the diameter if you don't know. If you know the diameter is this, from this, the distance from this point to this point is known as diameter. So if this diameter is 5, let it be 5 centimeter, so you also have to take a carton piece of 4 centimeter, because it can run in this very easily. Nice. Next, the most important thing, that run a motor with 2 wires connected already, and axle made up of pen. If you don't know how to make axle with pen, I will let you know in another video. So let's start. First, take motor, connect with 2 wires and check if is it running or not. Check by checking. We need batteries at this, and one side to one side, and another to another one. Is that another wire connected to another, and that's this. So as I can see, it is moving, so it is correct. So we have checked the motor. Second, step number 2. Take this piece of carton as the diameter equal to the diameter of this cap. Cover it with plastic tape. I have covered this now. Next thing what we have to do, we have to take this thing, 7 into 3 centimeter carton piece, only to put this one above, add this, fix this very nicely. For fixing you can take gum, glue, or tape. I am taking, or you can also use these type of screws. I am using these longer screw because this provide better attachment to this. For better attachment, I am using this. Better attachment means a better flexibility to motor, and our circuit also not breaks because of due to the vibration that motor done always.
So I have to fix it. For fixing this like this. See this? Into the another one also. For a better fixing, you can use this screwdriver, or you can also use big screwdriver. If you want more better attachment, you can also use nuts that you may put here. That also gives in better attachment. See this. Nice. It has been fixed. Next thing, I have to put this motor on this. And then the third piece I will put here to get the motor fixed. You can also use glue gun, but note that glue gun is a plastic. We do not have to use plastic, so why we use that silly thing? I'm not saying, sorry to say, that silly. It is a very nice thing. It joins anything fastly in just 2-3 seconds. But for our clean and green and precious environment, we can use this nut bolts. We can by doing this, we learn how to use screwdriver or to screw these screw nuts. And also gives a better look protection. And this सब glue gun यहाँ पे लगा के चिपका देते हैं, it will not look better. So do not use glue gun. If you want to use glue gun, it's your mind, use that. But by me, you must not have to use that glue gun. It contains plastic, a little high quantity of waste plastic, and during this plastic making, वो जो ग्लू गन के पीछे की रिफिल होती है, that is making by compressing and by heating the old plastic, and that leads to very toxic material, toxic gases to mix, and that leads to air pollution. So do not use that. It is a good thing to use this, not to use that. चलिए, तो ज़्यादा भाषण ना देते हुए मैं आगे काम शुरू कर रहा हूँ. टेप उससे ज़्यादा अच्छा है. हम जो ग्लू गन यूज़ करते हैं उससे मोर एफिशिएंट, मोर सब चीज़ में उससे अच्छा वो है. पर तभी भी हम पे भूत सवार है कि नहीं भाई, हम यूज़ करेंगे तो वही. मोटर फिक्स हुआ नहीं. वाओ,
बहुत अच्छे से हमारी मोटर इसके अंदर फिक्स हो गई है, आप देख लीजिए। और टाइट करने के लिए लीजिए, मैं ज़रा इसे और घुमा देता हूँ और टाइट। देखिए कितने अच्छे से फिसली आप ग्लू गन यूज़ करते हैं। देखिए इससे गर्म करने में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती, नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती, नंबर 2 एयर पोल्यूशन करता है, नंबर 3 जब हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम वो ये ऑप्शन क्यों यूज़ करें, ये मुझे बताइए। जब हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम क्यों एयर पोल्यूशन को और बढ़ावा दें, क्यों हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करें, बताइए। ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ द मेन थिंग टू कमेंट, ठीक है। मैंने चैनल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं आपको ये मेन देती रहूँ। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में अस्थमा के पेशेंट्स हैं, ऐसे हमें बहुतों की प्रॉब्लम होती है ऐसे एयर पोल्यूशन से। तो क्यों 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 ये करना। नाइस। ये हमने यहाँ कैप लगा ली है जिसमें बड़ा सा छेद था। नेक्स्ट हम इसमें भी ये लगा के छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें भी छेद करना ही पड़ेगा। हम छेद इससे भी कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे टेप से बंद कर देना है। लेट्स स्टार्ट। हमने हर जगह टेप लगा दी है। अब हम एक कैंडल जलाएंगे, वो मैं बताता हूँ। हमने कैंडल जला ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लेंगे, ध्यान से गर्म करेंगे। छेद कर देंगे एक तरफ छेद कर दिया, नीचे की तरफ ना हमने कुछ इस तरफ छेद कर दिया। अब एक छेद नीचे की तरफ भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए मैं बहुत छोटी करना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे एक पाइप लगाएंगे जहाँ पे हमने एक छेद किया था जो कि ऊपर की तरफ था यहाँ पे, और एक छेद जो हमने नीचे की तरफ किया था उसमें एक पाइप और एक पाइप यहाँ पर। इसको उठा के रखने के लिए आई डोंट नॉट हैव समथिंग एक्सेप्ट दिस। एक अब आप ये देख रहे हैं कि अब हमें ये दोनों बैटरीज को जोड़ने जा रहे हैं इसके साथ द मेन ब्लॉक। हाँ, अब वी हैव टू टेक बॉटल में एक छेद करना था, नीचे की तरफ नहीं है, मैं करके बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर छेद कर लिया है। अब इस छेद में इस पाइप को घुसा देंगे।
कुछ इस तरीके से हमने इसमें देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया है।